So hello everyone, welcome to back with a new video. So today's topic, what is a screen printing? मतलब स्क्रीन प्रिंटिंग क्या है और स्क्रीन प्रिंटिंग हम कैसे करते हैं, तो ये सब मैं आपको एक ऐप के थ्रू बताने वाला हूं, जो कि आप सीधा इस ऐप के थ्रू आप सीधा यूट्यूब पर जा सकते हैं। ओके, और आप प्रैक्टिकली यूट्यूब पर नॉलेज गेन कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्लास में, हम ये सब टॉपिक नहीं डिस्कस कर पाते हैं, नहीं क्लियर हो पाते हैं, तो आप इस ऐप के थ्रू सीख सकते हैं। और फैशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जैसे फैशन से हाउ टू मेक स्टिचिंग, हम स्टिचिंग कैसे करते हैं, पैटर्न कैसे कट करते हैं, ये स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप इस ऐप के थ्रू आप सीख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको इस ऐप के बारे में बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आई थिंक आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ऐप पर आ चुका हूँ। ये टेक्सटाइल कोर्स, ये टेक्सटाइल के कोर्सेज हैं। आप यहाँ पे पीडीएफ फाइल के साथ साथ यहाँ पे आप वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं वीडियोस पे, जैसे मैं वीडियो पे क्लिक कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करने के बाद सीधा यूट्यूब पर जा सकते हैं और सीधा यूट्यूब पर बहुत से टॉपिक्स हैं, जैसे हाउ टू हीट ट्रांसफ़र, स्क्रीन प्रिंटिंग, जैसे कि हम फाइबर बर्निंग टेस्ट कैसे करते हैं, डेनिम फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, मेल्ट स्पिनिंग ऑफ पॉलीमर्स। सो इन सभी टॉपिक पर आप डेप्थ में नॉलेज गेन कर सकते हैं सीधा यूट्यूब पर जाके। जैसा कि मैं आपको ओपन करके दिखाने वाला हूँ। हुज इट्स कार्बन फाइबर मैट, मतलब कार्बन फाइबर कैसे बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यूट्यूब पर क्लिक कर चुका हूँ। कॉटन की बर्निंग टेस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो आप इस पर इसी तरह से हम वूल और सिल्क ये भी हम इसी तरह से, मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया। सो आप इस पर नॉलेज, जब आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप खुद से बहुत अच्छे से, प्लीज वॉच इट केयरफुली। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्लैक्स की यहाँ पे बर्निंग टेस्ट के कैसे, यहाँ पर आप वूल की भी देख सकते हैं बर्निंग टेस्ट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको वीडियो इस ऐप पर मिलेंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिल्क की भी आप बर्निंग टेस्ट, सिल्क इज अ नेशनल फाइबर। सो आई रिपीट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ यू कैन गो नाउ दिस ऐप। इस ऐप पर आप प्लेन बिप को बेसिक एंड डेप्थ में, जैसे कि मैंने यहाँ पे दूसरा टॉपिक ले रखा है, तो आप उस पर भी देख, यहाँ पे मैंने प्लेन बिप टॉपिक पे In order to better understand basic fabric design and construction, we must look at the components of a woven fabric. Warp yarns are fed into weaving in a direction parallel to the selvages of the fabric. The filling yarns are inserted perpendicular to the warp. The edge of the fabric has a selvage, and with some insertion methods, there is a fringe. The fringe is created by the ends of the filling yarn projecting from the edge of the fabric and can be tucked back into the cloth with a tucking unit. The plain weave is the oldest, simplest, and most often used woven structure. It repeats on the minimum of 2 ends and 2 picks. This area is a single repeat of a plain weave. One can easily see that adjacent warp yarns weave in opposition to each other. When one end is up, the adjacent ends are down. After the filling is inserted, the warp yarns switch positions. The cross-sectional view shows the up and down movement of the warp yarn. Notice the blue and green warp yarns are moving in opposite direction to each other. Woven patterns are most often depicted on graph paper. The graph indicates how one would depict a plain weave.
When the warp yarn is shaded black, the warp end is up and the filling is down. When the warp end is up, this is referred to as a riser or float. When the warp end is down, this is referred to as a sinker and is depicted by a white square in the woven pattern. Plain weave fabrics have the highest number of interlacings of any weave. The result of this dense weaving is a relatively low tearing strength, higher tensile strength, lower snagging, tendency to ravel less, and tendency to wrinkle more. The basket weave is a derivative of the plain weave. The most common of baskets is the 2x2 basket. The repeat area is 4 ends by 4 picks. All ends weave in pairs, as do the picks. The illustration shows a 2x2 weave, which gives a distinct checkerboard effect. In basket weaves, if both warp and filling risers are equal, then the weave is considered to be a regular or balanced weave. Other regular basket weaves are 3x3 and 4x4. All basket weaves are not regular. For example, a 3x2 or a 3x2 by 1 by 1 or a 3x1. The Oxford weave is also a plain weave derivative. In this weave, 2 warp ends weave as one, while each filling yarn weaves alone. In most cases, the warp yarns are half the size of the filling yarns. Thank you for watching my video.